Question number 1. In Excel, to create a new workbook, shortcut key is use Control N. Question number 2. Open workbook can easily be switched using. ओपन वर्कबुक जो है ना वो इजीली कंट्रोल टैब करके जो खोली जाती है. इन एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज यूजिंग. वर्कबुक कैसे क्लोज की जाती है? कंट्रोल W से. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सेल में जो वर्कबुक है ना वो कंट्रोल प्लस W करने से क्लोज की जाती है. क्वेश्चन नंबर 4. टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल प्रेस. एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए प्लस F1. Question number 5. In Excel, which shortcut key is used to open the Save as dialog box? F12. Excel में shortcut की dialog box को. Question number 6. In Excel, Control S can be used to save. Press dash to bring up search box. Search box लाने के लिए Shift plus F5. While selecting multiple worksheet in Excel, following key must be also used when clicking the Sheet tab. Then the option is tab. Control is the right option. Question number 9. What is the shortcut key to highlight the entire column? Entire column को highlight करने के लिए Control plus space bar. Question number 10. What is the shortcut key to highlight the entire row? Entire row को highlight करने के लिए Shift plus space bar. Question number 11. To select all rows and columns in worksheet, press Control A. Question number 12. To minimize the currently selected windows, press. करंटली सेलेक्टेड विंडोज को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या प्रेस किया जाए? कंट्रोल F9. टू मैक्सिमाइज द करंटली सेलेक्टेड विंडोज, प्रेस. मैक्सिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F10 जो है ना दबाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स, प्रेस. ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस O. एन एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म अंडो ऑपरेशन. अंडो ऑपरेशन क्या करें? कंट्रोल प्लस Z. विच शॉर्टकट की ओपन the go to dialog box? F5F. Which shortcut key is used to copy a selected cell in MS Excel? Control plus C. Copy करने के लिए. To display the find and replace dialog box, press Control plus F. Question number 19. Which shortcut key is used to insert a new worksheet? New worksheet insert करने के लिए कौन सी की जाती है? The right option है which creates a chart the data in current range. करंट रेंज में क्या जो है ना डेटा चार्ट क्रिएट करता है? ALT प्लस F1. टू ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो, प्रेस. फार्मूला विंडो ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ द सेल. सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए क्या दबाया जाए? F2 की. Question number 23. How do you repeat the last command or action in Excel? Control plus Y. To cut the selected cell, shortcut key is U. Selected cell को कट करने के लिए Control plus X. To display the print dialog box in MS Excel, press Control plus P. What is shortcut key to insert a new command in a cell? इसका right option जो है ना Shift plus F2. Without using the mouse or arrow keys, what is the shortcut way to access cell A1 in a spreadsheet? इसका right option जो है ना press Control plus Home. Question number 28 हमारे पास है. What is the shortcut key to highlight the entire column? Entire column highlight करने के लिए क्या दबाया जाता है? Control plus space bar. What is the shortcut key to update formula in a table? फार्मूला को अपडेट करने के लिए क्या शॉर्टकट की? F9. क्वेश्चन नंबर 30 है. what the shortcut key to replace data in another sheet? इसका राइट ऑप्शन जो है ना कंट्रोल प्लस H. क्वेश्चन नंबर 31 है. what is the shortcut key to hide entire row? entire row को हाइड करने के लिए कौन सी की यूज की? कंट्रोल प्लस 9. what is shortcut key to unhide entire row? रो को दोबारा से दायर करने के लिए कंट्रोल प्लस Shift प्लस 9. क्वेश्चन नंबर 33 है. what is the shortcut key to hide entire column? entire column को छुपाने के लिए कौन सी की? कंट्रोल प्लस 0. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास. तो जी दोस्तों ये थे हमारी MCQ. थैंक्स.